Dear students, yesterday we have seen magnetic induction, magnetic intensity, magnetic permeability, and also we have seen magnetization and magnetic intensity. 5.5 we are in the topic of 5.5. Now see, today we have to see the definition of relative permeability. In magnetic permeability, what we have seen? We have seen that it is the ratio of magnetic induction by magnetic intensity. Okay, so we have seen that it is equal to, means magnetic induction is what? B, and magnetic intensity is what? H. So this magnetic permeability is given by B by H. So today we have to see what is relative permeability. रिलेटिव परमेबिलिटी किसे कहते हैं? सिंपल वे में रिलेटिव परमेबिलिटी मीन्स व्हेन वी आर रिलेटिंग किसके साथ? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. सो रिलेटिव परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू आर. म्यू आर इज द रेशियो ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है? इट इज द permeability of the free space. What is mu? It is the permeability of the material. So what is relative permeability? Relative permeability किसे कहते हैं? Relative permeability का मतलब है ratio of permeability of the material to the permeability of free space. Okay, so what is this relative permeability? Relative permeability is equal to, is given by ratio of permeability of material mu to the permeability of free space. So mu r is equal to mu by mu naught. ये जो relative permeability है, it is a pure number. It is what? It is a number. For free space, its value is 1. Mu r is equal to 1 for free space. It has no units and dimension. Formula क्या है? Mu r is equal to mu divided by mu naught. This is the value of relative permeability. Next, what do you mean by magnetization? Next क्या है? Relation between magnetization and magnetization M and magnetic intensity. Magnetic intensity is denoted by H. M और H के बीच में रिलेशन क्या है, ये अभी हमको फाइंड आउट करने का है. You see, in case of magnetic material, when a magnetic material is placed in a magnetic field, okay, what this says, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो मैग्नेटाइजेशन M है ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगा उतना मैग्नेटाइजेशन भी स्ट्रांग होगा. सो M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H. ओके, व्हाट द मैग्नेटाइजेशन रिलेशन क्या है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का? When a magnetic material is placed in magnetic field, the magnetization is directly proportional to the magnetic intensity. So M is directly proportional to H. So to remove this proportionality constant, there is a constant called G. M is equal to H is equal to G into H. This is called as G. This G is called as magnetic susceptibility. It is called as what? Magnetic susceptibility of the material. तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. सो फ्रॉम दिस
कॉन्सेप्ट हमें क्या मालूम पड़ता है, whenever a magnetizing material is placed in a magnetizing field, then magnetization is directly proportional to the magnetic intensity. M is directly proportional to H. So what will happen to this? To remove this proportional sign, chi is the value. This chi value is called as what? Magnetic susceptibility. अभी हमको देखना है what is this magnetic susceptibility. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज दिस, फॉर्मूले से ही हमको क्या मिलता है, m डिवाइडेड बाय h. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ, chi is equal to m divided by h. So magnetic susceptibility is nothing but it is the ratio of what? Magnetization m to the magnetic intensity h. So chi is what? This susceptibility is what? It is the ratio of magnetization to the magnetic intensity. So ये जो susceptibility है, it is a number. It is not having any units and dimension. Why it is not having any units and dimension? Because magnetization and magnetic intensity both are having the same units, so they will cancel each other. इसका जो magnetic susceptibility है, either the value of chi is 0, either it is positive or either it is negative. ये 3 conditions हो सकते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि कितना इजीली कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो सकता है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी व्हाट इट विल इंडिकेट? इट विल इंडिकेट दैट हाउ इजीली ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड. समझ में आया? सो अभी हमने क्या देखा? फर्स्ट हमने देखा रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. देन वी हैव सीन रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट इज गिवन बाय magnetization is directly proportional to the magnetic intensity, and to remove this proportionality sign we will be using the chi constant. This chi constant is called as magnetic susceptibility. So what is magnetic susceptibility? Magnetic susceptibility is again ratio of magnetization to the magnetic intensity of the magnetizing field in which it is placed. किसी भी फील्ड में किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग करने के लिए रखना है तो उसका रेशियो क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे बताएंगे हम? इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी h. दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए नंबर, इट इज़ नॉट हैविंग यूनिट्स नॉर द डायमेंशन. इसका वैल्यू कैसे हो सकता है? आइदर इट इज़ 0, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और आइदर इट इज़ नेगेटिव. ओके, अभी नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड susceptibility. What is the relation between relative permeability and susceptibility? So relative permeability and susceptibility, the relation we have to find out. So for this it is a derivation part, small derivation part is there. So relation between relative susceptibility, it is given by mu r is equal to mu naught 1 plus g. Relative susceptibility, relative permeability and the susceptibility, it is given by this formula, mu r is equal to mu naught into 1 plus g. G means susceptibility. So this formula we have to prove now. Okay, so ये फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ डेफिनेशन देखा है. ओके, सेकेंड वीडियो में हम क्या करेंगे? ये म्यू आर इज व्हाट? रिलेटिव परमेबिलिटी. म्यू नॉट, what is mu naught? It is the permeability of the free space. And what is this chi? It is susceptibility. So mu r is equal to mu naught into 1 plus g. तो ये हम सेकेंड वीडियो में डिराइव करेंगे. ओके.